Hey, hello all. This is Charvak Lokata and I welcome you all in today's live. और आज का जो लाइव का टॉपिक है थोड़ा लाइटर नोट है, लेकिन हाँ ये पॉलिटिक्स रिलेटेड है। हम चर्चा करेंगे ये जो मीडिया में बताया जाता है सो कॉल्ड लेफ्ट वर्सेस सो कॉल्ड राइट, एक्चुअल में क्या है ये। हम उसी टॉपिक पे ये डिस्कशन रहेगा। जो अपने आप को आज लेफ्ट बताते हैं, क्या वो सच में लेफ्ट है? जो अपने आप को आज में राइट बता रहा है, या अपने आप को राइट विंग नेशनलिस्ट पता नहीं फलाना फलाना जो भी वो नाम ले रहा है, ठीक है, क्या वो सच में वही है? हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये लेफ्ट वर्सेस राइट का जो डिवीजन है वो कहाँ से आता है और किस लिए आता है। तो ये टॉपिक थोड़ा मतलब पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए भी है और लोगों को समझने के लिए भी है कि भाई बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आएंगी, आपको मतलब बातें बताएंगी, आपको अपने विचारधारा बनाने हैं। Basically, a lot of political parties will come out and play their cards. You just need to know the political ideology. When somebody says left, are they really left? When somebody says right, are they right? Or when they say कि I'm a right-wing nationalist, I'm this, I'm that, are they really nationalist in this age of 21st century? That's a question mark. Basically, the common public are innocent. Innocent in the sense, if you talk especially about India, especially about subcontinent, very gullible public, very innocent. They can be easily hoodwinked by the politician. It only takes few amounts of bribe, money, and whatnot a day before the election to convince the public to voting into their political party. That's how it works. And maybe it works like that as well in Europe and America as well, who knows. So that's what I'm really discussing about. So basically, in India, we say left is like the Communist Party or CPI, CPM, Congress, blah, blah, blah. They are somewhat considered as left, center left. Maybe some even call it liberal left, okay? Or left liberal, whatever, okay? Right wing is considered as conservative parties or ultra conservative party who have ethno-religious kind of supremacy. Okay, ethno-religious supremacy. That includes BJP, AIMIM, AIUDF, IUML, Shiv Sena, Ram Sena. These are some of the political party, and many of them are regional and many of them are national. Okay, so this is how the media makes you believe. Okay, here is the point. Has anybody, whether from the left spectrum or the right spectrum, has come out and said fuck capital? Oh, sorry, I'm just using the wrong word, but let's dismantle capitalism. Let's dismantle capitalism. Capital, okay, ism. That's bad, or maybe bring some changes, an alternative system. This entire system is very screwed up. Let's bring bottom up change for this system. Whether across left or whether across right, that has never been discussed or even brought, or any serious visionary and vision or policy has been made regarding that. Okay, has there been political party who have come out unanimously to say dismantle casteism, dismantle varna system? Let's, why not dismantle this varna way of thinking? This binary is there in the mind, that Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, this kind of identity words in the mind. Let's remove it, let's dismantle it. But we never hear that thing, neither from the left, neither from the right. Has anybody proposed, like let's have no religion certificate, no caste certificates? Very few or none, basically none discussion. The problem here is what you are being told as a left by the media, or the so-called pundits, the political pundits, okay, is capitalist, pro immigration, and pro
pro immigration and pro something else, basically pro what to say, green movement, blah blah blah. Okay, that is so called left, which media likes you to believe, but they're capitalists in fact. Then you have so called right wing, which calls itself as nationalists. uh, Turns out when you google and when you look at the statistics, okay, what does the statistics say? Statistics tells that as capitalism grew out of Europe from UK to United States to other parts of the world, okay, so did the nationalism. The concept of nationalism, the concept of idea nation state, basically nation state as the unifying factor or the authority, okay, that grew up across the continents. It turns out more often than not, why do we see when a capitalist crisis occurs that a political party, मतलब जब भी हम पूंजीवाद को देखते हैं वो डाउन होता है किसी कंट्री में, तभी हम क्यों देखते हैं कि उस कंट्री का एक विशेष वर्ग या उस कंट्री का जो राजनेता है वो अचानक से अपने आप को राष्ट्रवादी बोलने लगता है। वो बोलने लगता है हम जो है इमिग्रेशन का लॉ नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, बड़े बड़े टाव पेच क्लेम करने शुरू कर लेता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये कभी आपने सोचा है? और आपको जो बताया जा रहा है कि ये वामपंथी है, भाई वो पूंजीवादी है, और वो ऐसे पूंजीवादी है जो चाहते हैं कि बाहर से व्यक्ति आए और हमारे देश में काम करे, ठीक है। और जो आपको मीडिया दिखाता है कि वो राष्ट्रवादी है, राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, वो जो आप सुनते हैं भारत माता की जय बोलते हैं, भाई वो भी पूंजीवादी है। और वो पूंजीवादी है, लेकिन वो ये नहीं मानते कि बाहर के लोग आके यहाँ पे काम करें। वो ये मानते हैं कि हमारे कंपनी का जब भी लॉस होता है, अरबपतियों का कुछ भी लॉस हो, गवर्नमेंट जो उनकी सेवा करे, जनता की सेवा ना करे, कारीगर मजदूर किसान की सेवा ना करे, बल्कि बड़े बिजनेसमैन को ज्यादा पैसे दो, उनके लिए लैंड सस्ते में दो, उनके लिए वो क्या बोलते हैं लोन कम कर दो या लोन माफ कर दो। ये है एजेंडा एक्चुअल में। कितने लोगों को पता है कि मणिपुर में अदानी जो है वो लैंड खरीदना चाहता है? वहां कोल है बहुत सारा, कुकी जो लैंड है माउंटेन में, वहां पे कोल है, और उस कोल को एक्सप्लॉइट करने के लिए अदानी जो है वो लैंड खरीदना चाहता है। कितने लोगों को ये चीज पता है? बहुत कम लोगों को पता है बेसिकली। लेफ्ट says fuck capitalism, loves capital. Earlier that was not the case to love capitalism, but now they love capitalism. I mean, it's not left really. I mean, after the Soviet Union's collapse, you had a period of revisionism, and I think in that sense, you look at it today, you see one is a capitalist which is pro immigration, pro LGBTQ and प्रो अबॉर्शन। मतलब वो जो राजनीतिक दल जो पूंजीवादी है और वो अबॉर्शन का समर्थन करते हैं, और वो जो है आपका क्या बोलते हैं इमिग्रेशन को समर्थन करते हैं, बाहर से आके यहाँ काम करे, उनको मीडिया बोल देता है लेफ्ट। और वही मीडिया जो है पूंजीवादी होते हैं, लेकिन वो जो बिजनेसमैन है उनको फायदा पहुंचाना है, और बाद में उस चीज को छिपाने के लिए राष्ट्रवाद का जो गाना गाते हैं, नाम लेते हैं, उनको बोल देता है कि ये दक्षिणपंथी है। तो ये गेम है मीडिया का, अनफॉर्चुनेटली हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लोग कहीं ना कहीं बेवकूफ बन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सच में आज के टाइम कोई राष्ट्रवाद होता है ना, एक काम करिए, गूगल में जाइए, दुनिया के टॉप कंपनियों का नाम सर्च कीजिए, बिलियनर्स का सर्च कीजिए, पता चल जाएगा। और उन बिलियनर का किन किन लोगों के साथ बिजनेस है वो आप देख लीजिए, फिर आप बताइएगा राष्ट्रवाद कि हाँ राष्ट्रवाद है भाई। तो आप 21वीं सदी एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे जब पे पूंजीवाद ग्लोबलाइज्ड हो चुका है। हम एक ऐसे वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर द capitalism has become globalized and it has almost penetrated into almost all the countries. You are talking about nationalism. I mean, that is absurd here. Okay, yeah, Aristophanes. Hello? Hello? Hello, can you hear me? Yeah, yeah. So what is today's topic? Is it about Okay, economy or in general?
Yeah, but it's a political analysis of the political parties and the ideology. Basically, what you see as a left or right is a media given label. I mean, it's not we who decide that what is left. Look at the ideological basis of capitalism and anti-capitalism. Okay, is it left or right on this basis ideological? Then, if not, then they are not left or right. Basically, I mean, if you look at European countries which calls itself left, are some of the most pro-establishment. यूरोप में अगर आप वहां का जो वामपंथी है वो तो भाई पूरा प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन का जो है लोन माफ करता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन का समर्थन करता है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। और वही यूरोप में जो मतलब अपने आप को दक्षिणपंथी बताते हैं और अपने आप को यह भी बताते हैं हम राष्ट्रवादी है, भाई वो भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के है। काम करने का तरीका अलग है। एक चाहता है कि वो आए चीप लेबर के लिए इमिग्रेशन को अलाउ करो, इलीगल या लीगल, ये काम है लेफ्ट का। सो कॉल्ड लेफ्ट का जो मीडिया बताता है वो एक ग्रुप, वो एक गुट जो कैपिटलिस्ट का है। दूसरा एक गुट है कैपिटलिस्ट का जो बोलता है नहीं इमिग्रेशन तो नहीं चलेगा, हम होने नहीं देंगे। मतलब वो गुट है कैपिटलिस्ट का जो यूज करना चाहता है जो व्हाइट सुप्रीमेसी के अंदर एक सेंटिमेंट होता है कि भाई मेरा नौकरी तो चला जाएगा, ये इमिग्रेशन तो आ रहा है, भाई मेरी नौकरी ले लेंगे, मेरा नौकरी खतरे में है भाई, अब मेरे को तो कंपटीशन करना होगा इन इमिग्रेंट से, मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है। तो ये जो एक इनसिक्योरिटी का माइंड रखने वाले जो कुछ है वहां यूरोप में व्हाइट्स, उनका वोट लेके पावर में आना चाहता है। तो जो वहां का दक्षिणपंथी जिसको कहा जाता है मीडिया में है तो पूंजीवाद, लेकिन वो कभी पूंजीवाद को ब्लेम नहीं करेगा, वो ये ब्लेम करेगा कि इमिग्रेशन आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस टाइम पे ये नहीं देखते दोनों जो पूंजीवाद है वो ये नहीं देखते कि भाई जो आ रहे हैं हमारे देश में उनकी विचारधारा क्या है, कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, अलगाववादी है, टेररिस्ट है कि नहीं है, ये कोई विचार नहीं देखते। और यूरोप एक एक मेस में है, इट्स इन अ मेस, अगर हम सही में बोले तो बेसिकली, ठीक है। और इंडिया में भी यही हुआ है बेसिकली अगर हम देखें तो। हैविंग सेड दैट, बीजेपी जो अपने आपको राष्ट्रवादी बताइए, मैं दिखा सकता हूँ बहुत सारे ऐसे रीजन जहां पे बीजेपी और आरएसएस जो एंटी नेशनल का ही काम किए हैं भाई, बहुत सारा, ठीक है, बहुत ऐसी जगह है। लेकिन लोगों में परसेप्शन बनाया गया तो लोग मान लेते हैं बेस्ड ऑन परसेप्शन एंड हियर से। इट्स लाइक चाइनीज विस्पर कि एक आदमी ने बोल दिया एंड इट रीचेस द ईयर्स ऑफ द 100th मैन एंड दे बिलीव because he sees that 99 people are believing it. That's how the society works, unfortunately. Yeah, Aristophanes, what do you want to speak? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इंडिया में लेफ्ट और राइट है, आप उसको यूएसए से कैसे कंपेयर करेंगे, जब वहाँ पे लेफ्ट राइट एंड लिबर्टेरियन वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस? Okay, so here is the thing. मेरे लिए अगर आप सही से हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, आपको कभी लेफ्ट में वो चीजें नहीं दिखाई जो बताया जाता है आज के लेफ्ट में है। बेसिकली आप वो चीजें नहीं देखोगे। It's not even left. I mean, basically, it's like media making out a left versus right out of it. ये मीडिया आपको दिखा रहा है बेसिकली, ओके, नैरेटिव में वो है। प्लेंटी ऑफ डेमोक्रेट्स जो है जिनको यूएस मीडिया कहता है कि दे आर प्रो गवर्नमेंट, दे आर नॉट प्रो गवर्नमेंट। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ना जाने कितने कंपनियों का टैक्स माफ किया है, लिटरली फ्रीडम दिया है लूटने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन को। आप ब्लैक रॉक, ब्लैक स्टोन गूगल में टाइप कीजिए, ये कंपनियां, दे आर एटलीस्ट $9 trillion assets worth, those companies, 9 trillion. BlackRock, 8 trillion. You know, Ukraine war, they purchased some 80% stocks from Ukraine, basically, these companies. I mean, war, whose war is it? Ukraine war. I don't see it's Ukraine's war, basically. I mean, Russia is winning, but
who is really benefiting out of this Ukraine's mess here? Yeah, Russia has some benefit, but it seems the US companies are taking. Same thing in India, right? In India, right? Back in 2014, when we all voted Modi, and back then, even I used to think in 2014 that Congress was probably only good for independence, and maybe we need to vote for BJP for development. Okay, I used to think that, but all my this illusion broke when Modi announced demonetization in 2016. Basically, I knew back then that the small businesses are screwed because it takes at least 2 or 3 days for the small businesses to get back those collection or bundle of 2000 rupee note, and by the time they get, their business is gone basically. So I knew that it was a disaster, and it turned out to be disaster in many ways, and GST came. So yeah, it was a disillusion. But then now when I hindsight, when I read closer look of economics, world global economics and geopolitics, I realize one thing, that the current government is following the austerity economics. If you haven't seen my live on austerity economics policy, what is austerity economy, आप वो लाइव को चेक कीजिए. ऑस्टेरिटी इकोनॉमी क्या है, मतलब लिटरली आपको सन्यासी कैसे बनाया जाए, ये वैसा इकोनॉमिक पॉलिसी है जो आज के मोदी सरकार का है. अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही क्रिएट नहीं होता है समाज में, जानबूझ करके बेरोजगारी को क्रिएट किया जाता है ताकि जो रोजगार कारीगर है उनके ऊपर बॉस दबाव बना के बोले कि भाई मार्केट में तो बहुत सारे बेरोजगार है, अगर तुम मेरे तनख्वाह जो मैं तुमको दे रहा हूं उस पर काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बजाय किसी और को ले लूंगा. और वो जो बंदा, उसके माइंड में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि यार ये कौन लोग है भाई जो इतने मतलब क्या बोलते हैं आपका लोग है जो मेरे को रिप्लेस कर देंगे. कौन लोग है? वो देखता है कि मेनी ऑफ देम आर इमिग्रेंट्स, वो देखता है इसमें ब्लैक पीपल भी है, वो इसमें देखता है कलर्ड पीपल भी है, वो देखता है इसमें कि भाई आपका मुस्लिम कम्युनिटी से भी बहुत सारे लोग हैं. यहां से आपका एक साइकिल ऑफ हेट्रेड शुरू होता है. बट वो कभी अपने बॉस को ब्लेम नहीं करेगा, बॉस को नहीं बोलेगा कि भाई आप तो लाखों करोड़पति पैसा कमा के रख रहे हो, आप एनजीओ के नाम पे, आप एंडोमेंट्स के नाम पे, आप एम्बेजलमेंट के नाम पे, टैक्स इवेजन के थ्रू शेल कंपनीज, आप ये सवाल कभी नहीं करोगे. और पॉलिटिकल पार्टी जो जो डोनेशन लेती है वो वही बताएगी जो रोजगार है. बीजेपी पार्टी रोजगार का ही वोट चाहती है, और वो ऐसे रोजगार लोगों का वोट चाहती है जो जलती है, जो बेरोजगार युवा है उनसे जो जलती है. बेसिकली मेनी ऑफ दम जो SC ST OBC से आते हैं, उनसे जो जलते हैं, उनका वोट ले जाए. और SC ST OBC में एक वर्ग बना दिया गया इनके मन में कि तुम तो मेहनत ही नहीं किया, और उनको ऐसा लगता है हम मेहनत नहीं किए हैं, हमारा काम कोई और लेके चला है. बेसिकली ये पॉलिटिक्स हो रहा है इंडिया में. प्रॉब्लम ये है कि इसका कभी इकोनॉमिक एनालिसिस होता नहीं है. इस्लाम इज ए प्रॉब्लम, नो डाउट. अगर आप इस्लाम का हिस्ट्री देखेंगे तो नो डाउट इट स्टार्टेड विथ लॉट ऑफ वायलेंस एंड मेनी अदर रॉन्ग थिंग्स. बट अगर आप आज के टाइम देखोगे, हाउ हैज दिस बिकम ए बिगर मेस, then you have to blame. Islam is the dominant problem in India. Yeah, in Indian context you could say that, but if you look globally, right, मेरे को एक चीज बताइए, यूएस ने क्या बोला था, वॉर ऑन टेरर. 20 साल से ज्यादा हो गए, वो पता नहीं कितने वॉर ऑफ टेरर कर रहा है. मुझे बताइए, टेररिज्म को कम हो जाना चाहिए था. मुझे तो मेरे हिसाब से अलकायदा खत्म हो जाना चाहिए था, तालिबान खत्म हो जाना चाहिए था. उसका एकदम उल्टा हो रहा है बेसिकली. अलकायदा या नए नए ग्रुप्स आ रहे हैं. इनफैक्ट आर्टिकल 370 वाज रिमूव्ड. बेसिकली अगर हम देखें तो आर्टिकल 370 हट गया. अंधभक्त से पूछिए कि भाई आर्टिकल 370 क्या, वो नहीं बता पाएंगे. हाँ, वो इतना बता देंगे मेरे को कश्मीर में जमीन खरीदने का मौका मिल गया, मैं जमीन खरीद सकता हूँ. उनसे पूछिएगा भाई उनसे पूछिएगा कि आपके पास तनख्वाह है, आपके पास नौकरी है, आपके पास पैसा है जमीन खरीदने का, वो नहीं बता पाएंगे. और उनसे पूछेगा आर्टिकल 370 के बाद क्या और कितना आर्टिकल है, वो नहीं बता पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का. अच्छा, आर्टिकल 370 किसने लगाया, वो भी नहीं बता. वो बोल देंगे हाँ नेहरू ने लगाया था, नेहरू जो है वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा था. ये नहीं बताएंगे कि जो 370 आर्टिकल है वो राजा हरि सिंह
और सरदार पटेल ने एक अग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें हरी सिंह ने खुद बोला था कि आप कश्मीर को एक ऑटोनोमस स्टेटस दीजिए, इस कंडीशन पे मैं इंडिया के साथ जुड़ने को तैयार हूं। और ये कंडीशन को रखकर ही नेहरू ने आर्टिकल 370 लागू करवाया कॉन्स्टिट्यूशन में। नो डाउट बाबा साहब अंबेडकर ने अपना एक इसको अपोजिशन जताया था, बट जो कश्मीर फाइल का मूवी है उसके ऑथर ने या उसके डायरेक्टर ने कितना मतलब रिसर्च किया, उसमें बोल रहा है 1952 में सरदार पटेल जो है नेहरू का विरोध करता आर्टिकल 370 को हट के। कृपया करके गूगल करके देख लीजिए सरदार पटेल का देहांत कब हुआ था, सरदार पटेल की मृत्यु कब हुई थी, कौन से साल में हुई थी। मतलब मैं तो पूछता हूँ 1952 में क्या सरदार पटेल नाम का कोई भूत था क्या, भूत बात कर रहा था क्या नेहरू से, या नेहरू को गाली दे रहा था, हम तो ये पूछ रहे मूवी वाले से। मतलब यहाँ पे बेसिक फर्स्ट 20 मिनट 21st सेकंड ऑफ द मूवी जो कश्मीर फाइल है, यहाँ पे इतना बड़ा ब्लंडर। और पूरे मूवी में कहीं पर भी ये चर्चा नहीं हुई कि भाई वहां पे सरकार किसकी थी जब एक्सोडस हो रहा था, कश्मीरी पंडित को मार के भगाया जा रहा था। उस जनता समय पार्टी। जनता दल की सरकार थी और उसका सपोर्ट कर रहा था बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी। बीजेपी का 85 सीट्स था आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और लेफ्ट फ्रंट का आई थिंक 50 और 45 सीट्स ऐसा कुछ था। वो सपोर्ट कर रहे थे उसको। और जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जो पीडीपी, और पीडीपी जो प्रो पाकिस्तान पार्टी है, जब उसको मतलब उठा के होम मिनिस्टर बनाया गया तो बीजेपी ने तो कोई अपोजिशन नहीं किया, तब कोई प्रदर्शन नहीं किया बीजेपी ने, ना ही एल के अडवाणी ने किया जो कि बीजेपी के उस टाइम के लीडर थे और एक पोस्टर बॉय थे। फिर आप देखते हो कि भाई एक्सोडस होता है तो उनका पहला इशू उठाने वाला कोई बंदा है मोहम्मद यूसुफ तारेगमी, और वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। वो कम्युनिस्ट इशू पार्टी। उठाता है, उसको हाईलाइट नहीं करते मूवी पे। वो पहला व्यक्ति था इंडिया में जिसने लिखा इस्लामिक टेररिज्म, ये शब्द का उसने पहला प्रयोग किया था, इस्लामिक टेररिज्म का। और ये He is बंदा hated कम्युनिस्ट, by everybody, even Kashmiris. या मोहम्मद यूसुफ तारेगमी कम्युनिस्ट। अंधभक्त से पूछे ना कौन है ये, मूवी में उसको क्यों नहीं दिखाया। अच्छा मूवी में ये क्यों नहीं दिखाया गया कि भाई जो पंडितों का एक्सोडस होना शुरू हो रहा था तो भाई अडवाणी जी रथ यात्रा बीच में क्यों कर रहे थे, अडवाणी जी को जाना चाहिए था कश्मीर में वहां संभालने के लिए, रथ यात्रा क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे। बेसिकली ये बीजेपी वालों से द प्रॉब्लम इन इंडिया इज वॉट एवर यू सी टूडेज बीजेपी इज एक्चुअली कॉपी पेस्ट। 1994 में कांग्रेस ने एक क्या बोलते हैं आपका ऑर्डिनेशन पास किया था पार्लियामेंट में राम मंदिर को लेकर के। उन्होंने बोला था कि जो बाबरी मस्जिद का एरिया टूटा है हम एक राम मंदिर वहां बना लेते हैं, और जो बाकी का जो मस्जिद जिनको बनाना है उनके लिए हम एक सेपरेट लैंड अलॉट कर देंगे। दैट वाज व्हाट वाज द ऑर्डिनेंस सेड। यू नो किसने इसका विरोध किया था उस टाइम में, बीजेपी ने उसका विरोध किया था भाई। वही पार्टी जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुत्व का वो एक झंडा उठाने वाला पार्टी, उसने विरोध किया था इस ऑर्डिनेंस का पार्लियामेंट में। और ये ऑर्डिनेंस पास किसने किया था, कांग्रेस ने। ये अजीब बात है, ये कितने अंधभक्तों को पता है ये चीज बेसिकली। तो बेसिकली मैं यहाँ अंधभक्तों को बताना चाहता हूं, जिसको तुम लेफ्ट बोल रहे हो और जिसको तुम राइट बोल रहे हो, दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी, भाई दोनों एक ही है। एक पूंजीवादपतियों के लिए जो है माइग्रेंट लेबर सप्लाई करेगा, और एक जो है पूंजीवादियों के जितने भी कमियां हैं, उनके जितने भी बिजनेस लॉसेस है उसको कवर अप कर देगा। डिमोनेटाइजेशन के बाद लगभग 20,000 करोड़ का कर्जा माफ हो गया टॉप कॉर्पोरेट कंपनियों का। बेसिकली यूएस में जो सरकार करती है उसी का एक कॉपी पेस्ट यहाँ पे बेसिकली। तो पॉलिटिकल अगर हम साइड रख दें, इस मुद्दे पे कोई मेन स्ट्रीम माफिया डिबेट नहीं करने वाला, मेन स्ट्रीम माफिया आपको लड़ाने वाला है। शुक्र मनाइए शायद किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल पिछले वीक देख लिया, जहां मैंने बताया था कि जो ट्राइबल लोग हैं उनको बीच में एक प्लेटफॉर्म में लाके एक पीस एग्रीमेंट करवाना चाहिए, और
वही हो रहा है। मैं कई मिलिटेंट ग्रुप जो है वो पीस एग्रीमेंट को अग्री किया है, और कुकी जोमी जो है उनको भी लिए पीस एग्रीमेंट के लिए अग्री किया जा रहा है। वही हो रहा है मणिपुर में अब। एंड गवर्नमेंट जो है, अच्छा लगे या ना लगे, उसको कुकी जोमी का ज्यादा साइड लेना पड़ रहा है। मैंने यही बोला था, वही हो रहा है भाई। तो शायद मेरा लाइव किसी ने देख लिया, किसी को शायद अकल आ गई, और वो पता नहीं क्या हुआ। बट एनी हाउ, एनी वन गुड न्यूज, सोल्यूशन पे बात आया तो आई थिंक सोल्यूशन इज ओपन द डोर। ओके, सो लेट्स होप कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी। एनी हाउ, या अरिस्टोफेंस, और आपका क्या कहना है? आप बीजेपी को समझते हो कि एक राइट विंग पार्टी है, या आप इसको सिर्फ एक लॉबी, बिलियनर्स का लॉबी समझते हो? You know, I see both Congress as a capitalist and BJP as a capitalist. Okay, but the Congress says कि इमिग्रेशन ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो हमारा इकोनॉमी इसलिए डेवलप्ड है, इसलिए वो वहां से आ रहे हैं, ये एक एक्सक्यूज हो सकता है, ठीक है। बट देयर कैपिटलिस्ट नॉनदलेस, क्योंकि you need a cheap labor supply for the Indian industrialist and business to maintain their profits, basically. Yeah. Okay. और आप देखो, आप आसपास पड़ोस में देख लो ना, कितने सारे नेपाली है, कितने सारे आपको बिहार से मिल जाएंगे, उड़ीसा से मिल जाएंगे, आपको ना जाने कितने लोग जो है बांग्लादेश से भी मिल जाएंगे, कुछ लोग नौकर चाकर आपको। और उनको बोला जाता है कि हम जितना पैसा मालिक देता है हम उससे कर लेते हैं। इट मीन्स दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। बट इंडियन लॉ जो है वो शायद उसको वो करना नहीं चाहते, वो डिमांडिंग हो जाते हैं बहुत। ये देखा गया है हमें इंटरेस्टिंगली इंडिया में कि जो इंडियन लेबरर्स है, स्पेशली फ्रॉम सर्टन कम्युनिटीज जो ओबीसी से या एससी से आते हैं, वो कभी कभी ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं नौकरी को लेकर के, वेजेस को लेकर के। इट्स अ वे टू अवॉइड दिस बेसिकली। बीजेपी से या डेफिनेटली इट्स, उसको पॉलिटिकल पार्टी भी बोलना कम है, इट्स मोर ऑफ ए पीआर मैनेजमेंट कंपनी बेसिकली। इट्स अ वन मैन शो। वन मैन वो जो है क्रिकेट खेल लेगा आपके लिए, वन मैन जो है वो रेलवे मिनिस्टर बन जाएगा, वो वन मैन जो है आपका कभी डिफेंस मिनिस्टर बन जाएगा, वन मैन कभी पायलट बन जाएगा, वो वन मैन जो है वो कभी आपका पंडित या पुजारी भी बन जाएगा। मतलब इट्स ए वन मैन शो, एक वन मैन पर्सनालिटी है, उसका फोटो सर्कुलेट किया जा रहा है, उसी को ही मतलब हाईलाइट कर रहे हैं न्यूज वाले। बीजेपी जब जीतता है तो उसी का फोटो डाल देते हैं, बीजेपी जब हारती है तो उसका फोटो हटा के नड्डा का फोटो डाल देती है। बीजेपी के ही वोटर से पूछ लीजिए कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा कौन है, नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछिए कि भाई मुरली मनोहर जोशी कौन है, नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछिए कि भाई कम से कम श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम सुने या वो भी भूल गए, नहीं बता पाएंगे। हाँ, मोदी योगी पूछे बता देंगे। बट इन द थिंग इज, वोटर जो है बीजेपी का, वो पीआर मैनेजमेंट में इतना फंसा है, इतना अंदर वो घुल चुका है कि उसको दिखता नहीं है योगी आदित्यनाथ मोदी के अलावा। हेमंत बिश्व शर्मा शायद कुछ लोगों को पता चल जाए, बस उसके अलावा पूछेगा उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है, नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछे गुजरात के सीएम का नाम क्या, नहीं बता पाएंगे आपको। उनसे पूछे बीजेपी जो पार्टी है वो बनी कब थी, नहीं बता पाएंगे। आर्टिकल में टोटल कितने मतलब प्रावधान है, नहीं बता पाएंगे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है वो नहीं बता पाएंगे भाई। मतलब ये हाल है भक्तों का। बोलेंगे अखंड भारत, एक वीडियो मैंने देखा था एक भक्त का, बीजेपी वोटर का, वो बोल रहा था अखंड भारत में कितने देश आएंगे। रिपोर्टर पूछ रहा था, लोग तो देख करके हंस रहे थे कि कहीं क्या बता देगा, कहीं ये ना बोल दे मोदी और योगी ही है भाई अखंड भारत में। शुक्र मनाइए उस लेवल का नहीं चला गया भक्त। लेकिन उसने बोला 140 राज्य है, 140 देश जो है वो अखंड भारत बनेगा, परचम तो पूरी लहराएगा दुनिया ही भारत हो का। गई। बाबा वो एकदम कोमा में चले गए, लगता है सन्नाटे में चले गए। बाबा जी खड़े थे वहीं पे, पंडित जी, वो तो बोल रहे हैं भाई ये दो अंधभक्त कोमा में चले गए, इनको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लेवल हमारे यहाँ वोटर का ये है फिलहाल। दिस इज द लेवल ऑफ वोटर्स कि आप मिनिमम इंफॉर्मेशन भी नहीं जानते। आप बीजेपी को वोट कर रहे हो, ठीक है करो भाई, कोई आपको रोक नहीं रहा है, आपका एक डेमोक्रेसी में आपका राइट्स है उसमें, ठीक है। कोई कांग्रेस को वोट कर रहे हो, वो भी डेमोक्रेटिक राइट है, ठीक है। कम से कम जान तो लो। आपको पता नहीं है आप क्यों वोट कर रहे हो, और आप वोट कर रहे हो भाई, क्यों नहीं? पूछिएगा मोदी जी के 5 काम,
वो नहीं गिना पाएंगे आपको। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत कम है एजुकेशन पे। मैं एग्री करता हूँ, ये ऑस्टेरिटी इकोनॉमिक्स ही है। ऑस्टेरिटी इकोनॉमिक्स से क्या आप गवर्नमेंट का बजट, एजुकेशन बजट कट करो, हेल्थ केयर बजट कट करो, सोशल वेलफेयर स्कीम, सोशल सर्विसेज जो होते हैं एट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, उसको कट करो। जब ये सब आप कट करोगे ना, आप क्या करो, कंज्यूमर आइटम्स पे या तो टैक्स बढ़ा दो, या नंबर ऑफ कंज्यूमर आइटम्स बढ़ा दो टैक्सेबल, ठीक है। यही हुआ है जीएसटी के थ्रू, ठीक है। फिर आप फ्यूल प्राइसेस का टैक्स बढ़ा दो, सेस। इंडिया हैज द हाईएस्ट फ्यूल प्राइस, जैसे मैंने आपको उस पिछले लाइव में दिखाया था जो ऑस्टेरिटी इकोनॉमिक्स में। और उसमें साथ में एक और चीज जो है, टैक्स कट ऑन द कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स का सारा टैक्स कट करो, उनका टैक्स माफ करो, उनका लोन माफ करो, ठीक है। मिलिट्री बजट जो है थोड़ा इंक्रीज हुआ, लेकिन ज्यादा इंक्रीज नहीं, दे हैव इंक्रीज्ड इट स्लाइटली बट नॉट मच। इट्स नॉट ए वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज, ओके। आई मीन अगर हम यूपीए के, इंडिया नीड्स मिलिट्री। या इंडिया नीड्स मिलिट्री, बट अगर आप यूपीए के टाइम और अभी के टाइम को कंपेयर करेंगे, देयर हैज बीन ओनली 0.20% ऑफ इंक्रीज इन द military budget, basically 0.20%. And it has been varying in between, but overall that's the average increase under this government. So it's not a big deal here to increase for that. Basically it's somewhat similar, but it's not a huge kind of spike which they try to make promise people of, okay. हुआ यह है कि इन्होंने पूरे प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया है, और ये काम मुसोलिनी ने भी किया। मुसोलिनी वाज ए फाशिस्ट डिक्टेटर, बेसिकली ही डिड दैट। और डिमोनेटाइजेशन भी किया था मुसोलिनी ने, जहां पे उसने बोला था आपके घर में जितने भी गोल्ड है, गोल्ड के आइटम है ना, उसको आप सरकारी दफ्तर में दे दो, वो इसको मेल्ट करके वो बिस्किट बना के भेजेंगे, बिकॉज इटली वाज गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ डेप्थ एट द टाइम। ये उसका था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा, हियर इज द पॉलिसी विच द करंट गवर्नमेंट इज फॉलोइंग। राइट विंग आपका ये है, लिबरल भी कहीं ना कहीं इसी को फॉलो करते हैं, बट मे बी इन ए मोर सॉफ्टर वे। दे डू इट वाया बीइंग प्रो इमिग्रेशन। यूरोप में अगर आप देखेंगे जो लेफ्ट है, जैसे आपके मैक्रॉन हुए वगैरह, वो एकदम प्रो इमिग्रेशन है, यूरोपियन यूनियन, बट द प्रो इमिग्रेशन हैज मेंट they continue to follow the same austerity economics through subtle ways, in a softer way basically, but वो कर वही रहे हैं। फ्रांस में रिसेंटली ये हुआ है कि उन्होंने जो रिटायरमेंट है फ्रॉम 62 years they increased to 64 years basically, Yeah. so that the companies can continue to exploit them basically. That's how it's working out. I mean, this is a messed up situation. आप एथीस्ट है, बहुत सारे एक्स मुस्लिम में देखा हूं जो एथीस्ट है, लेकिन दे हैव नो आइडिया अबाउट सिस्टम। वो प्रो सिस्टम है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, प्रो वेस्टर्न जो इंपीरियल नैरेटिव है, कि इंपीरियलिज्म का जो नैरेटिव है, वही नैरेटिव को वो कंटिन्यू करते तोते की तरह। उनका ये नहीं होता कि एक सिस्टमैटिक एनालिसिस हो सोसाइटी का। देयर इज नो सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड प्रॉपर सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रपोज्ड। उनको लगता है मैं इस्लाम को कंडेम कर दूंगा और मुसलमान इस्लाम को छोड़ देगा। वो नहीं हो रहा है आपका। अनफॉर्चुनेटली द इजराइल पैलेस्टाइन वॉर ने बहुत सारे जो वाइट है अमेरिका में, उसने Has made कन्वर्ट the किया matter है, worse. उसने कन्वर्ट किया है लोगों को इस्लाम लेने पे। और एक्स मुस्लिम जो है, दे कंटिन्यू टू स्टैंड विद इजराइल। आप इजराइल का जितना समर्थन करोगे, जो प्रो पैलेस्टीनियन वाइट्स है, अमंग द वाइट पॉपुलेशन, द जेन जी व्हिच इज प्रो पैलेस्टीनियन, वो बोलेंगे कि हम इस्लाम ले लेंगे, वी आर प्रोटेस्टिंग, वी टेक इस्लाम, वी आर कन्वर्टिंग टू इस्लाम बिकॉज मुझे प्रोटेस्ट करना है इसके अगेंस्ट। They may not know the history of Islam, they may not know the theology of Islam, they may not know what is there in the Quran. Maybe they show off They in think TikTok it's that a I read Quran, but brown man religion. They only think of it that way. उनको शायद पता नहीं होगा। But the thing here is, ex-Muslim community hasn't properly managed this freaking mess here, Israel Palestine. आप इजराइल पैलेस्टाइन में आपको होना चाहिए था प्रो सिविलियन। When I say pro-civilian, it includes both the Palestinians and the Israelis. Okay.
पैलेस्टीनियन में जो बच्चे और जो मदर है उनको कवर करेगा प्रो सिविलियन में, और इजरायली जो बच्चे हैं उनको भी कवर करेगा. यू शुड हैव बीन ए प्रो सिविलियन and anti-elite, anti-elite of the Palestinian community and anti-elite of the Israeli community. ये स्टैंस होना चाहिए था. This should have been a proper way to deal with the situation, basically. And the Bhats are happy thinking that Israel is fighting terrorism, but we have a conclusive evidence that Israel insisted Mossad to go to Qatar and start funding Hamas. Biden administration has released $10 billion to Iran during this Gaza war. Last महीने गाजा वॉर में ही हुआ है ये. बाइडन गाजा से पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने भी 10 बिलियन दिया था शायद. हाँ, उससे पहले 6 बिलियन दिया था ईरान को. और ईरान किसको फंड करता है? हिजबुल्लाह को फंड करता है. और इजराइल चिल्लाता किस पे है? यूएस पे नहीं चिल्लाएगा इजराइल चिल्लाएगा ईरान के ऊपर. But they will not shout at US for giving those billions to Iran, basically. And अंधभक्त को ये पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता है. मोदी गवर्नमेंट is getting carried away by this mob of Hindutva nationalist or supremacist to go to this extent. Thinking कि मैं pro Israel stance ले लूंगा तो US will help. US is backstabbing India again and again. When will we realize US is not a geopolitical ally of India? We don't make a great alliance. Russia is our great alliance, geopolitical. Saudi Arabia, yes, maybe. UAE, yes, certainly, because UAE has invested historically a lot in India during the oil trade. You know, when we had this boom of petrochemical company of Indian Petroleum and Reliance, UAE heavily invested. They are our allies, basically. Okay, Iran has somewhat been a decent partner in the geopolitics, but overall, India abhi, I don't know, they're trying to go totally like global north, basically. हो तो तुम part global south के, but you try to identify yourself as a global north. That's kind of bizarre, really. I mean, China holds its head high in global south on its own, basically. मेरे को मैं बहुत सारा हिस्ट्री अगर पढ़ता हूं, in the last 40 years, okay, last 20 years has been the worst if you talk about Islamic terrorism. Last 40 years, this was just a development in the process, basically. Development in the process last 40 years, but last 20 years it has gone berserk and worse. Okay, imagine you have Germany, right? Germany is set to take the Gazan refugees who face the bombing there. Okay, what do you think that mother who lost her child in front of her eyes, bombed by an Israeli missile, go there in Germany and do? Who is probably facing a psychological trauma, anger against Israelis, anger against kind of the world, and whenever she sees a child, she gets angry. My son is not there. How come that child is living? What would she do at that state of mind if she arrives there as a refugee in Germany? मेरे को बताइए आप. She would be more radicalized, you know. Exactly. Support more neo-Nazis. Yeah, and she might probably do the stabbing. Ireland में हमको एक न्यूज़ मिला था, एक man did stabbing. It turns out riots happened there. Yeah, and by the way, who is bombing Algeria? France. France is bombing Algeria apparently, and yeah, he goes there and he sees that these people have been allies of France, and he just takes out his frustration for. I mean, people may not understand, but his you understand deep psychology, right? That's how it plays. Yeah, I know. I'm living two lives. Yeah, I mean, if he's taken to police interrogation,
he will not say exactly the same things which I am saying, but he will say, my Quran gives me this justification, my Hadith gives me this justification, and then people think it's only the problem of Islam. Yeah, Islam is 50% of the problem, but what about the rest 50% of the problem, which comes from imperialism and this economic structure, basically the rest 50%. So that's what I have been arguing, that you cannot be an opponent of Islam and continue to support the West and its capitalist utopia. It doesn't work out that way, and it has never worked. It has only gone in wrong direction, basically. Bush administration said same thing. They sparked debates on Islam. Lot of people have been condemning Islam. Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens. You have lot of militant atheist movement in America, in Europe, who have come out and condemned Islam time and again, time and again, time and again. Okay, yeah. Tell me, how many terrorist people got de-radicalized, or how many people who thought of joining the terrorist group decided, I'm not going to join terrorist groups, jihadist groups, and I'm leaving the Islam. It's no longer my cup of tea. How many? Very few or none, basically. आपको लगता है So जो इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं वेस्ट में वो मैंडेटरी करने चाहिए इमिग्रेंट्स के लिए? more than an integration program, you need a mental counseling. You need a counseling. A lifelong counselor is needed. You freaking idiot. You imagine Syrian refugees, you imagine the Gazan refugees, you imagine the Iraqi refugees. Okay, they have seen these bombings time after time after time. Okay, and when they go to masjid, they see that Imam is reciting some verse and he talks about jihad. He feels a sense of justice. Maybe Islam gives me that sense of justice to stand up. Maybe I can use this as an opportunity to take revenge. And he creates a circle of terror groups, terror networks within Europe. These people create these groups, a tiny group of 10, 15 people across the streets, across the towns, villages. They do gathering, and they say, hey, we went to mosque, we went to this madrasa, we heard this. See, Islam gives us the justification for our cause, for what the West did to us. We can justify it through Islam, that they did wrong, even if we are caught. Okay, I mean, it makes it worse. Refugees first and foremost need counseling. They need somebody to heal their traumas, and then you start giving them training on, slowly, maybe technical skills or soft skills and those sort of thing, and then uh, uh, maybe involve people from UAE and Saudi Arabia. They can help you out, right? I mean, why exclude them? I think West makes a big mistake by not involving UAE and people from Saudi Arabia. Especially, there are people like Imam Tawhidi. Why not involve him? He can explain things in much better way, in a more sensible way. Okay. You can give example of UAE, that it's developed. It's an Islamic country, but it's developed, and there is no terrorism there. That's how you de-radicalize. You tell them just about enlightenment, European philosophy, just it's not going to work. They don't find any connection. These people don't find any connection. They need something to connect, and they know that Europeans are different, Arabs are different. How are we to connect? The philosophies don't have a peculiar match. Their approach to diet and food doesn't have any peculiar match. Even when it comes to the matter of sex, their approaches are different. How am I to relate and become myself better version? So you need people from, especially some enlightened and liberal secular trainers from Saudi Arabia, who is an Arab explaining to another Arab, basically.
That's what is needed, basically, Okay. here. Yeah. So Because back to you the look at topic, Europe, right? Yeah. Back to the topic. Yeah. it's center, left, and far right in India. So what do you think our real problem in India is? Low wages, poverty, overpopulation, which never gets covered. And Mob. what do you think is a solution, like authoritarian left or libertarian left? Okay, this is kind of bit tough, but given the current India, I like this idea of New Deal, which Franklin Roosevelt implemented in America. New Deal, okay? Go check it out. Franklin Roosevelt, he did that in America. That kind of thing would do great, okay, in the current scenario. Then you have Richard Nixon putting wage price freeze in 1972, okay, because he didn't want to lose election, but he did that, and that too, he being a Republican, he did that, okay. So there are some things that can be kind of opposition who calls itself opponent of BJP can think about, but I don't think so they will do all these things, okay. I highly doubt that. Libertarian left is an interesting idea. It's interesting because there is a lot more scope of decentralization. Okay, the libertarian left says decentralize. There is no state monopoly like China or USSR, but has a lot of scope of direct democracy, people to people democracy, something you see in Switzerland to an extent. Okay, it has that scope basically. Then there is another good thing why I think libertarian left is somewhat better than authoritarian left is because it encourages these worker cooperatives. Okay, the thing is it says ownership and decision making be in the hands of the workers or the employee. तो जो कंपनी है उस कंपनी के जो कारीगर है, जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, वो डिसाइड करेगा मैनेजमेंट कैसे चलाना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, मार्केट में कितना बेचना है, कितना प्रॉफिट बनाना है, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, ये जो डिसीजन है ये वर्कर डेमोक्रेटिकली, ग्रुप ऑफ वर्कर्स विल डेमोक्रेटिकली डिसाइड. लिबर्टेरियन कम्युनिज्म का या लिबर्टेरियन जो लेफ्ट कहा जाता है, सो कॉल्ड, हम जैसे हम समझते हैं, उसका एक फायदा ये है बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन एक हद तक. और इसका एक और पॉसिबिलिटी पॉजिटिव तरीका ये भी है कि इट यूनाइट्स डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल ऑन एन इकोनॉमिक इशू. बेसिकली इकोनॉमिक इशू इज कॉमन अक्रॉस द कम्युनिटीज, रिलीजन, कास्ट. इट हेल्प्स गैप दोस थिंग्स. इवन हम देखें अगर कास्टिज्म की भाई बात करते हैं, you have various group of castes working in a same company, but it turns out there are some castes which has this management position and there are other castes which have only the worker and employee position always. Okay, this kind of dominance of one versus the other happens. Okay, लिबर्टेरियन कम्युनिज्म अगर हम वर्कर कोऑपरेटिव की बात करें, व्हेन देयर इज अ वर्कर कोऑपरेटिव, यहाँ पे उसका फायदा ये है कि एवरीवन इज ऑन द सेम पेज. देयर इज सर्टेन लेवल, देयर इज नो लाइक टॉप डाउन अप्रोच, कोई ऊंचा है कोई नीचा, वो नहीं है. एवरीबडी गेट्स इक्वल importance to make the decision. Okay, that is kind of good if you look even from the social perspective. Okay, that kind of helps bring some amount of cohesiveness, though I do think representation in PSUs is still good thing. Government, instead of reducing the PSUs, need to increase the PSUs, the public sector units. It needs to increase the public sector units, and it also needs to increase the representation of SC, ST, OBC proportional to their population in India. And I'm saying across the community. So what that will do is it will also elevate the backward fringe communities of Muslims, which is Pasmanda, or whom we call as Ajlaf. Okay, the OBC, even they can be kind of given representation and elevation. Okay, those things can play a good role.
These are the thing. And if you talk about wages, one of the reason why wages has gone stagnant is the companies don't increase the wages. If you look at the package for the Infosys for fresher, अगर आप Infosys का पैकेज देखोगे फ्रेशर्स के लिए 2013 में 3 लाख से लेकर 3.25 लाख पर एनम था. 2023 है, 10 साल हो गया, वही पैकेज चला रहा है Infosys. While उनके जो सीईओ है, उनका जो सैलरी है, इट हैज बीन मोर देन 2,000 times in average worker in that company, an employee in that company. The CEOs have made, back in 2013 CEO का सैलरी था आपका 80 lakhs per annum. Now it's 80 crore per annum. Can you imagine 100 times the, I mean 10 times increase of, per annum salary? Wow. I mean that's insane. उस हिसाब से देखा जाए तो भाई वर्कर का भी इंक्रीज कर देते कम से कम एटलीस्ट 5 times instead of maybe 3 lakh, maybe increase it to 10 lakh per annum, maybe as a starting fresher salary. नारायण मूर्ति के रिसेंट स्टेटमेंट्स देखोगे तो आप बोलोगे मैं तो क्या यही हो रहा बताने है वाला आजकल. था. Yeah, you know how much his worth is. His worth is $4.5 billion. That is approximately 460 crore in Indian rupees. Okay, and he has this NGO called Infosys Foundation, जो बोलता है cultural and NGO and whatever philanthropic organization. You know how many crore it has? It has around 369 crores. 369 crores as an endowment. This is just endowments. Okay, and these endowments are not taxable. Basically, they are donations. They are, and majority of it comes from where, it comes from the Gates Foundation. Melinda Gates, Bill Gates, their foundation, Gates Foundation. They get. And added to it, profits made through this Gaza war, because Narayan Murthy's son-in-law is none other than Rishi Sunak, the Prime Minister of UK. And what he has done is, there is a UK oil company which has signed a deal with Israeli, deal with Infosys, that is the company of Narayan Murthy, that गाजा के पास जो ऑयल है, जो तेल है, जो नेचुरल गैस है, वो निकाल के, स्पेशली जो कोस्ट लाइन, द कोस्ट ऑफ द गाजा जहां पे हो रहा है वॉर, वो वहां से तेल निकाल के देंगे इन्फोसिस को at a cheaper price, at a cheaper rate. Basically, that's the agreement. Sunak doesn't want ceasefire. He wants the war to continue for precisely this reason, that they can dig the entire Gaza. Gaza का पूरा खुदाई करके oil और natural gas जितना निकाल सकते हैं निकाल लेंगे. Yeah, and that is win-win for Infosys as well. So people ignore these things. The behind the scene economics behind the scene plays a very, 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 very important role. It's not just Islam, it's not just the jihadist mind which plays these things. Okay? Yeah. It was good to talk with you. I'll be going now. Yeah. Sure. Do come and join. I think I have posted you about the live. I'm having a meetup session where we get ex-Hindu, atheist, ex-Muslim. We can certainly sit together and work. We did not go bootlicking other groups to get funds, get some sort of mental satisfaction or fame. That's not required. We can work together. Ex-Muslims, ex-Hindu, atheist. As atheists, we can work together. Okay, and we can raise some important concerns from both the communities. Basically, yeah. Okay. Thank you. Yeah, sure. Keep coming. Yeah. Okay, bye. Yeah, bye. ओके, ये अरिस्टोफेंस थे. और कोई आना चाहता है तो दे कैन कम एंड ज्वाइन माय लाइव.
that organization would fail. No, the organization will not fail. I'll give you one example of cooperatives in Emilia Bologna in Italy. They contribute to like one third of GDP in that region, and they're pretty successful, and they're running for more than 100 years, basically. So the worker cooperative is not a bad idea. It works. Okay. I mean, I'm not saying everything will be perfect, but yeah, certainly it has some promising things to look at, basically. Okay. From technical perspective, one of the advantage of worker cooperative is multitasking. So multitasking means you get to develop multiple skills. Whereas a corporate capitalist organization which has its hierarchy of board of director, manager, those sort of things, there the skills are very specific to the team, to the department. Okay, so you may not get that sort of opportunity to grow. Okay, though there are training sessions and there are certifications, but uh, do they really have any practical implication? Many of them don't actually. Okay, so yeah, one of that advantage of worker cop is there is like cyclical rotation as well. So the cyclical rotation between this management position and the employee position also ensures that the workers get the opportunity to develop their skills, soft skills, technical skills, management skills, uh, people skills, all those sort of things, which is a big bonus as well. So yeah, that's one of the cool things. We need a revised salary. Yes, you need, especially in if you talk about private companies. Yeah, but it's also important in the PSUs as well. Government needs to expand the dynamicity of the market. It should not be only private, it should not be only PSUs. Okay, different industries has to be explored, basically. Okay, there is somebody else coming. Hi, Neo Gibson. Hello. Hello, can Hmm. you hear me? So you Yeah. were talking about worker cooperatives, right? Yeah. Uh, don't you think like means we have like the previous person has said it is bound to fail. Um, I have my objections to it, but haven't we tried this type of stuff in Yugoslavia already? Okay. Yeah. I understand. Yugoslavia, it did fail, but there are a couple of reasons, and these are mainly reasons of for politics, basically. Okay. So what happened Yugoslavia? Yugoslavia kind of isolated itself from the Soviet satellite states. It didn't want to be part of that. Okay. So Tito didn't agree to it. Then you have the West Europe. It didn't want to go with Europe as well completely, basically. Okay. So Tito came up with this idea of this worker co-ops and uh, this worker self-management. Basically, it wasn't even completely co-op, but it was self-management. Management decisions were made by workers in terms how they are going to produce, but the decision of investing and where to sell, that was taken by the party officials. Okay, so there were party official kind of maneuvering in between as required. Okay, that's also another thing. Main thing, I think, what happened with Yugoslavia's economy was the oil embargo, okay, of the 1970s. Their economy took a big hit during the 70s thanks to the oil embargo. Okay, and that oil embargo meant they could not even reach out to Soviet Union, Russia for getting the natural gas and the oil as supply, because that's something like politically challenging. Okay, they had to rely on Italy to get it, and it turns out it was very expensive to keep up with it. Okay, so this was one of the main reason that after death of Tito, the kind of economic collapse. Okay, however, there are successful worker co-ops as well in the history. Let's give you example. Spain's Mondragon. Spain's Mondragon is a classical example of worker co-op, which is fairly successful, and it is among the top 10 companies in that country, Spain. Okay,
Then there is another worker co-op in India itself, which people don't talk about, which is Amul. Lijjat Papad, worker co-op of women. I mean, it's mind-boggling that they didn't take loan. Many companies, enterprises will take loan from the bank and then they work out, but they didn't take loan. They started with a very small amount in the 1950s, assisted by one person from I forgot the name. This was Servant Society of India, basically. Okay, founded by Gopal Krishna Gokhale. So he assisted them. He just told that you collect some money and don't take loan, and they started the business. And today its worth is around 160 crore. I mean, it's not bad. It's good. It's doing well. Okay, if you look at it. Then you see other cooperatives. Okay, the other cooperatives I include is Urulangul in Kerala. Okay, this cooperative's job is about construction. Okay, it's related to construction workers who run this company, and it has managed to survive in Kerala. Despite there was a time in 90s when the government of India in 90s were liberalizing this market, and at that time you see this what to say retail rent industry. Okay, the housing and this industry, they started private boom came off. So they thought construction companies, private companies have the upper hand, and this is going to be finished in Kerala. Turns out, against all odds, they have managed to continue. Okay, whether it's alternating Congress government or the communist government, they have managed somehow this upheavals. Okay. Then there is another Yes. worker co-op which I get to remember. Yeah, go ahead. You can go even with Amul, but whatever research we have even looked into, what do you say, Montegrill, it still works with very basic economics. Not basic economics, like low level economics. Like they're not talking about high tech. The Yeah. jobs that are for the future. So that's one of the places that I kind of do not encourage this. This is even if you look at it, this worker cooperative is a much older idea. This is the idea which is bought by John Locke and all. Even if you read the what do you say, Mm-hmm. Marxist manifesto, these are Yeah. the socialists who are considered to be utopian socialists. And if you look at Manchester United, even they started as a worker co-op, but over a Mm. period of time, they had not able to sustain unless there has been strong governmental pressure which kept their sustainability. I think I Mm, think yeah. Here is another thing. I have thought about this failure, and when I look at the failure, it turns out the mm, business and the finance. You read the history of capitalism closely, right? Capitalism began through this merchant community of Europe, mercantile community. Okay, they mm, had the money, they had the capital, they started this banking. Okay, they mm, with the serfdom. So basically serfdom was asked to keep some items as mortgage with them, and they are supposed to pay loan, and once they paid they can take their item back. Okay, that's how this banking thing emerged, and from this banking started the capital investments, and here comes the capitalism. Okay, it becomes a boom first in the Netherlands, but after that UK or England gets the biggest hold of this. It becomes like mother of capitalism, UK. Okay, so yeah, here is I where have the a story of very, capitalism starts. I have Here, a hang very on, hang on, hang different on, description. Yeah. hang on, let me continue. Mm, We know mm, industrial revolution takes place and these investments come from these same banking groups. Now here is the thing, the banks were all private family owned, and they were run with this same hierarchy. What I mm, think needs, in my opinion, needs to be done is kind of democratization of this financial group, financial mm, institutions. Okay, or at mm, least workers need to have their cooperative bank of their own. There are cooperative bank, but there is you might have heard something called as mutual aid or mutual credit. Okay, yeah. something Mm, like that. This I see as a potential for development. mm,
basically. It's worth considering. I mean, you include like capitalism started like 300, 400 years back. It doesn't mean that initially there was no failure when they were doing that in a feudalistic environment. So when capitalism started, it was a feudalism in Europe and all over the world. So obviously they encountered failures initially with feudalism, but eventually it did become successful, right? Same thing with socialism. Debatable. Okay, fine, you can debate that. That's okay, but I'm just highlighting certain points, okay, here, just to keep a perspective. Same thing with socialism. This idea that to go beyond capitalism, this debate started around the 19th century. Soviet Union was one such experiment, and yes, it failed. There are like failures, there are successes as well. Some success, some failure. We can debate what could have prevented that failure or what could have been done better about that failure. We can always debate on that. Okay. Same thing here. These are new experiment, and there is a chance that maybe we will solve this, and maybe who knows. Future is uncertain. You never know. Maybe we get more worker cooperatives which are successful. I'm not saying that everything will be perfect, but there is a chance. I'm just saying this is comparatively better. Let's give it a chance. I'm just saying that going ahead in the future, because right now most people didn't even know properly about worker co-ops. Okay, most people didn't debate about this even in the intellectual circles. Okay, they didn't debate about this, but now slowly and steadily these things are coming into the mainstream debates, especially if you look at the intellectual circle and even among the laborers, especially if you look at America, Europe. There, this debate is going on, this need for kind of reorganization, reorientation, that's open now basically. But actually, worker co-ops actually predate a lot of these, not industrial capitalism, at least by financial capitalism for a long time. Uh, uh, if you can look at, what do you say, what's his name, Owens. Every person that, Marx calls as an utopian socialist, all of them are actually basically worker co-op things, and they're predominantly, uh, what do you say? The whole thing is about owning the, what do you say, means of production. It was primarily an agrarian, uh, what do you say, agrarian Yeah, predominantly in agrarian sectors, or you can find it in guilds, etc. It's not something which yeah, is particularly new, even when it comes to capitalism, or what do you say, in the history. Yes, so it's not such a new concept. It's just that whoever have tried it have uh, failed. That would be a better. There are examples in which, like, out of like 100, there will be examples which have succeeded, but that's not a model for like a long-term vision. The okay. So same thing with the, here is the thing. Here is the thing. Okay, fine. I'm agreed. There may be success, there may not be failure. But the real question is, does these debates even happen in the mainstream media? Or does even mainstream no, media bring about even the success or the failure of these things? Okay. I mean, that's mainly I mean, because like, if you're talking, I can say there have been capitalist organization with hierarchy which has failed, bankrupt. Anil Ambani is a classical example of it in India. In America, maybe I can name the Epsteins or somebody like that. They are an example. There have been, okay, but the real problem is uh, media, right? The media is somewhat not discussing this diverse variety of management thinking or organization. I'm just opening it up, okay, here. yeah, Do you I mean, understand, right? even I had a similar, what do you say, epiphany when coming to this issue. But like somebody asked me a very simple question. You're starting a co-op. Okay, Hmm. you have to put a share of this much percentage, etc. Okay, if you're
Brahmin guy, who would you engage yourself in? Who would you bring yourself into the organization? Since workers are not just workers, right? It is Mm-hmm. family connections, family this. So indirectly, aren't you just kind of recreating a caste system with worker co-ops? Okay, yeah, thanks for highlighting that pitfall. Yeah, this is one thing to be considered. Uh, I mean, yeah, I hope this is a very important point you brought up. Yeah, so I think yes, it's still important to. That's why I said before that other person left that I still think reservation is important and it needs to be emphasized. I still talked about these things like a representation pertaining to the proportion of population and all those sort of things. So that's one of the thing which is is there in my back of mind, and yeah, that needs to be emphasized. Okay, this is a very important point which you raised. I think completely forgot about it, but yeah, thanks for reminding. But that's why I said that there could be pitfall. I'm not ignoring the pitfalls here. Basically, I'm considering that. Okay, and I said Yeah. categorically that we need to give the representation proportional to their population. Try involve them more, basically. Okay, try involving the upskills from this community. Give them the opportunity. Given the opportunity, they will do well. For example, in Tamil Nadu, right? If you look at the UPSC list, many people from North have this general category names, and they are mostly general category. Okay, but if you look from Tamil Nadu, majority are from SC OBC basically. How come? So obviously, the government there over the years, the Periyar-led ideology has allowed them to give that opportunities, right? Given the opportunity, they can outperform even the general category. So that's what is important here. Okay, that needs to be recognized. That can only happen when you give some like proportional representation in the job sector and in the industries. Okay, yeah, And I was also very convinced by your what do you say about the cooperative banking thing? Uh, yeah. because unknown to what do you say, many people, read this the Do you problem know, of people. do you know that Ahmedabad Bank, Ahmedabad Cooperative Bank is a cooperative basically. Yeah. Not many people know basically, but it is. Okay, uh, here is another cooperative bank I can think of in West Bengal. Actually, the sex workers. Okay, led by supported by the then left front government, they established their own banks basically to support themselves economically. Okay, the sex workers, because they were, I mean, what the situation they go through, right? So it turns out they did well basically to support themselves. Yeah, Yeah. problem of recession, when we talk about depression, recession, it's a problem of the private companies. It's not a problem of the public sector unit. It's not a problem of, cooperatives or problem of some other organized institution. It's a freaking problem of the private institutions, basically, depression. It's somewhat by them and it's faced by them again. It's kind of whole circle back to them, basically. That's the issue, basically. And It's in connecting. America, right? In America, you don't see, there is not a single hospital which is public owned. In India, you can say AIMS is public owned. Maybe you get better facilities, cheaper healthcare, but good quality one. Okay. You can't say that about US. US has everything privatized, and it all depends on the profit driven. So you look at the COVID statistics. COVID statistics speaks the failure of the healthcare system in US basically. The number of dead people, the number of what you say infected, the number of people who are suffering from post COVID complications, it's huge. Okay, and even now it's happening if you open.
But in India, we managed to do better than them despite our humongous population, and that's thanks largely to people, that ASHA workers and government supported infrastructure in India. It played a big role here, basically. And I don't think that is two comparative events for different reasons. Where I know a little bit of the healthcare of both of them, because even Sweden even didn't ask for a lot. It was there is a problem in culture in US for sure, but don't think that's what do you say, apples to orange comparison. But yeah, US When does the have that COVID, problem. when the COVID happened there, they didn't even have the masks and the PPE kits. They didn't even have that, folks. Trump had to come and tell the companies what to do. And these same people there in US debate how less to reduce the government, and Republicans say we need to reduce the government. In fact, government had to come and say more control to government. We are going to come and intervene in the economy. We are going to come and intervene in this situation. So But it kind of fails Sweden there, has basically, the claim. Sweden has an unprecedented anomaly. I mean, this is not something I would like to discuss because it's much complicated from what I have read about it. If you don't mind. Okay, maybe, Yeah, but maybe, maybe. yeah, Maybe. I mean, and yeah, that's. See, yeah, again, if you look at Europe as well, let's and not definitely, forget Italy, Spain. They had their issues, no doubt. But I'm talking about the number. I mean, if you look at the percentage of deaths contributed by country like US versus the other countries' deaths, it's very significant. Okay, that's what. And Pfizer vaccine has lot of side effects. It turns out we just come to know about it now. Pfizer vaccine जो है, उसमें बहुत सारा side effects है. It has and not basically. only what do you say, implementation of that. Well, I have looked into it. I understand it's like a very what do you say, once in a lifetime kind of anomaly that we can make any judgments over it beyond a point of time. But yeah, No, I'm not just doing it. I'm just highlighting that uh, South Korea is a capitalist country too, South Korea, but they were better prepared. They controlled it much better. They continue because they to already they, they they had a continue flu. to, and they hang on. Being a capitalist country, they provide subsidized healthcare to their citizens. Being a capitalist country. Yeah, they had a flu epidemic before, so they were prepared. If you look Yeah. at the people who were, I live in Chennai, so the people were already wearing masks before we did, so they were kind of Hmm. prepared for the sector. So different countries and different, you can't make a huge judgment on it. But I do understand that American healthcare has huge problems raising Yeah. out of capitalism, some sort of capitalism. What? I recently saw a video. A man had to pay $1,900 to get a stitch. Okay. And when after a few days he went to the same hospital to get the stitch removed, he was told, "This is emergency ward. You need to go to somewhere else." Medical ward. He went to medical ward and he told them, and they said you need to pay $1,900 to get it removed. Yeah. He said, what? I have to pay again? I mean, I mean, insurance covered only for the $1,800. Okay, had there been no insurance, he would have had to pay for something like $3,700. Okay, and when he came back again, okay, insurance is like a one-time coverage. They're asking him to pay him again. He doesn't have the money. He doesn't want to pay as well because again, that's kind of going away from him. Well, you know what the nurse did? uh, they told, if you want it for free to be removed, we can't do the remove. Here we give you the scissors, we give you the this suture, all that. You remove it yourself in a small packet. They gave it to him and he had to go. Can you If imagine you the look, state there, the mess? then So if you look at another alternative model, which is fully capitalist, Singapore.
and they do well. But Yeah. there's some certain factors Even which even are even even look, inherent. keeping aside Singapore, even Switzerland does well. And I pointed out that in Switzerland there is a direct democracy. There is people to people, and there is little bit of open source, basically. Mm. So that means there is no like one person getting hold of everything. There is something called as consensus which works, okay, between Mm. the private companies. So private companies operate very well there, Switzerland, and there are many top-notch private companies who do great and who do are well in export. And at the same time, there is something called as decentralized democracy, okay, Mm. which we call as federalism, but they have their own version of it in Switzerland. Yeah. Okay, you kept your point. Okay. Thanks for joining. I hope you understand my point. Okay. Yeah, I get it. Right? Yeah, I mean, I'm not suggesting you make this no change is going to happen overnight. Okay, let's be clear. It happens gradually. It happens looking at the success and the failure, a closer analysis of what went wrong and what could have been prevented, and what could be the future ahead. All these deep thinking question, based on that, things or ideology or sort of policy can be created. Okay, Yeah. so I hope you got my point. Yes, yes. Right. Okay. 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 Thanks for joining. Yeah. Okay. So हाँ, तो चलिए भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बात किए, और मैं चाहता हूँ लाइव को ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ये लाइव को देखें। और जैसे कि मैं बताया, भारत में पूंजीवाद ही है जो लेफ्ट भी बनता है, और वो पूंजीवादी ही है जो राष्ट्रवादी भी बनता है। राष्ट्रवादी पूंजीवादी तब बन जाता है जब क्राइसिस है, जब उसका नैया डूब रहा है। अपने डूबते हुए नैया को बचाने के लिए जो है वो अपने आप को देशभक्त राष्ट्रभक्त बोल लेता है। जब उसको पता है कि भाई हमारी नैया अच्छी चलाना है, और मुझे कुछ क्या बोलते हैं आपका ऐसा माल चाहिए जो एकदम चीप है, जिसके लिए मैं ज्यादा पैसे ना खर्च करूं, तो मैं लेफ्ट विंग भी बन जाऊंगा। मैं किसी ऐसे को ले लूंगा जिसको हम मीडिया में लेफ्ट बोलते हैं। बेसिकली आज के टाइम में जो लेफ्ट है वो पूंजीवादी है जो माइग्रेशन चाहता है, और वो पूंजीवादी है जो बोलता है माइग्रेशन नहीं चाहिए और हम अपने आप को राष्ट्रभक्त बताएंगे, देशभक्त बताएंगे, राष्ट्रवादी बताएंगे। ये चक्कर है बेसिकली पूरा का पूरा। दोनों ओर से गेम खेला जा रहा है। वास्तव में आप पूछेंगे फिर वामपंथी कौन है? वामपंथी वास्तव में क्या है? फिर वामपंथी अगर हम वास्तव में देखें तो आपको इसके लिए भगत सिंह को पढ़ना होगा, आपको एम.एन. रॉय को पढ़ना होगा, आपको जो है राहुल सांकृत्यायन को पढ़ना होगा, डी.डी. कोशाम्बी को पढ़ना होगा, अंबेडकर को पढ़ना होगा, पेरियार को भी एक हद तक आपको पढ़ना होगा। तब आप बोल सकते हैं कि हाँ, वामपंथ क्या है। जो बोलता है रिलीजन को आप निजी मामला रख सकते हो, वो आपका मतलब समाज और पूरी तरह डिसाइड नहीं करता। आपका लेबर, आपका काम और आपका हक और अधिकार जो है, जो आर्थिक और सामाजिक है, वो आपका डिसाइड करती है आपका समाज में क्या स्थान होगा। बेसिकली ये आर्गुमेंट हम देख सकते हैं, एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। वामपंथ इसको हम बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण पंथ जो है वो बोलता है कि जो रूढ़ी परंपराएं हैं या रूढ़ीवादी है, उसमें भी कुछ अच्छी बातें हैं, हमें उसको लेना चाहिए, रूढ़ीवाद को हम रख सकते हैं, उससे भी शायद समाज का कुछ अच्छा हो सकता है। बेसिकली ये राइट विंग होता है आपका। लेकिन आज के टाइम में कोई डिफरेंस नहीं रह गया, जिसको मीडिया लेफ्ट बोलता है और जिसको मीडिया दक्षिणपंथी बोलता है, उनमें कोई फर्क नहीं रह गया अनफॉर्चुनेटली। और ये अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज के टाइम में ये एक होता है ना क्रोनी पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनिज्म, ये चल रहा है। व्यक्तिगत संबंध बना लो पूंजीपतियों से और उनके जरिए लोगों को लुटवाओ। एक सोशल इंजीनियरिंग तैयार करो, एक ऐसा भीड़ तैयार करो जो इस पे सवाल ही ना खड़ा करे। ये है बेसिकली।
इसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल कैपिटलिज्म जो आज चल रहा है, ग्लोबल कैपिटलिज्म बेसिकली। ओके, मतलब आपको, और ये अगर बोलते हैं कि दुनिया में मिडिल क्लास है, तो भाई मिडिल क्लास इसलिए क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां जो है, प्राइवेट कंपनियों को डर है कि कहीं पे ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ना हो जाए, या कोई चे गुएरा ना आ जाए, या फिडल कैस्ट्रो ना आ जाए, या कोई लेनिन या माओ ना आ जाए, ये डर है। इसलिए जो है भाई कंपनियां बोली कि ठीक है, थोड़ा हम जो है वो क्या बोलते हैं आपका चेंज कर सकते हैं, थोड़ा हम पेंशन दे देंगे, आपका सैलरी बढ़ा देंगे, हम आपको प्रमोशन दे देंगे, हम आपको जो है वो ये सब करेंगे, आपको हेल्थ केयर इंश्योरेंस दे देंगे, एक्सीडेंट इंश्योरेंस दे देंगे, ये सारी प्रॉमिसेस जो है देने। ये इसका इफेक्ट ये था, कम्युनिज्म का जो डर है, रेवोल्यूशन का डर प्राइवेट कंपनियों में इसलिए करना पड़ा बेसिकली, ये भी है। Eman Roy became capitalist. He didn't become capitalist, but he certainly became something called as centrist. Basically, he became something called as kind of liberal communism, liberal communist. ठीक है? He didn't want authoritarian communism. Basically, he moved away from that. पहले वो अथॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट करते थे, वो मूव अवे हो गए उससे, एंड ही डिसाइडेड टू टॉक अबाउट radical humanism basically. So वो था एमन रॉय का basically. So एमन रॉय was a fierce supporter of this kind of authoritarianism as well initially. Okay, but later on he kind of changed his stance and he become more sort of libertarian communism. I mean, in the sense that authority will not be there, but still, you know, there will be egalitarian policies or works to look at it. फिर कोई गरीबों का मसीहा कैसे बन पाएगा? जुमलाबाजी करिए, बन जाएंगे भाई, जुमला बेसिकली। यूरोप के अगर आप नेताओं के देखेंगे, उनके जुमले कुछ कम नहीं है, वो जुमले पे जुमले बोले हैं। अमेरिका के नेता को देख लीजिए, आप यूरोप के नेताओं को देख लीजिए, बहुत सारे जुमले बोले हैं, लेकिन किया एकदम वही जो मैं बता रहा हूं। बेसिकली आपके पास आज के टाइम एक चॉइस है, और वो चॉइस ये है कि आइदर यूर ए प्रो एस्टैब्लिशमेंट, प्रो पूंजीवाद, या मतलब आप पूंजीवाद के समर्थन में, या फिर आप पूंजीवाद का विरोध करते हुए बोलते कि हम इस पे हम सोच सकते हैं। ये दो पोजीशन का ऑप्शन रह जाता है आज के टाइम पे बेसिकली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल मतलब दोनों ओर से पूंजीवाद ही है, और वो नाटक कर रहा है। कभी मतलब होता है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, कब गंगाधर बन जाए, कब शक्तिमान बन जाए, वही चक्कर है। हमको ये समझना होगा यहाँ पे, ठीक है? ये जो बोलते हैं ना हम वेगन है, वेगनिज्म, और ये कोई बोलते हैं कि मैं क्लाइमेट ग्रीन मूवमेंट लाऊंगा, वो ये भी एक तरीका है पूंजीवाद का ही लूट। ओके, अगर आप में से किसी को कुछ संदेह है तो वो इसको वेरीफाई कर सकता है। ये जो सो कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी मूवमेंट, ग्रीन मूवमेंट, जिसको यूरोप में बढ़ाते हैं, अमेरिका में बढ़ाते हैं, और हम इंडिया को लेक्चर देते हैं, ये भी बड़े बड़े वही कंपनियां फंड करती है, वही कंपनियां जो है सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। ऑयल कंपनियां, तेल कंपनियां हो गई, लाइफ स्टॉक कंपनियां हो गई, वही है बेसिकली। तो हमको ये चीज समझना होगा यहाँ पे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, लोग इसको समझते नहीं है, उनको लगता है कि भाई हमने राष्ट्रवादी आ गया, हम देशभक्त बन गए, हम ये बन गए, हम वो बन गए, हम लिबरल कह लिया, हमने पता नहीं क्या कह लिया, प्रोग्रेसिव के लिए। अरे भाई फर्क नहीं पड़ता आप अपने आप को क्या टैग लगाते हो। आप अपने आप को एथिस्ट का भी टैग लगा लो, आप अपने आप को ह्यूमनिस्ट का भी टैग लगा लो, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, जब तक आप जो अथॉरिटी है, जो एलिट है, मतलब समाज के कुछ ऐसे विशेष वर्ग जो हमेशा लोगों को रूढ़िवाद में रख के उनको लूटना चाहते, जब तक इस चीज का विरोध नहीं होता, तब तक आप समाज में चेंज नहीं ला सकते, चाहे आर्थिक हो या चाहे सामाजिक हो।
ये चेंज नहीं आ सकता है। आपको यहाँ पे या तो मानना पड़ेगा हाँ मैं पूंजीवादी हूँ, पूंजीवाद का समर्थक हूँ, या फिर आपको ये मानना पड़ेगा नहीं मैं पूंजीवाद का विरोध करता हूँ और एक अच्छा बेटर ऑल्टरनेटिव आ सकता है, हम समाज को बदल सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं मैं जातिवाद का भी समर्थन करता हूँ, या आप ये बोल सकते हैं नहीं जातिवाद और ये जो वर्ण व्यवस्था है इसको छोड़ के हमें एक नए समाज, एक नए व्यवस्था की ओर जाना है। दो ही ऑप्शन आपके बच जाते हैं इसमें बेसिकली। ठीक है, लूटने के हजार तरीके, आपको आप चौंक जाएंगे अगर आप यूएस पढ़ेंगे, इकोनॉमी यूएस के इकोनॉमी। तो भाई जब जब क्राइसिस होते पेपर प्रिंट होता है, मनी प्रिंट कर देते हैं। एक यूएस के फेडरल रिजर्व का एक बयान था, उसे पूछा गया कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता तब क्या करते हैं, वो बोलते हैं हम पैसा क्रिएट करते। कैसे क्रिएट करते, बोलते हैं ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं, आउट ऑफ नथिंग वी मेक मनी आउट ऑफ नथिंग, जस्ट लाइक दैट। जब उसे पूछा गया कि इसका कोई वैल्यू है, इसका कोई मतलब बेसिस है, वो बोला नहीं कोई बेसिस नहीं, कोई वैल्यू नहीं, हम ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं पैसे को, जितना डिमांड हम वैसे ही क्रिएट कर लिए पैसे को। ये एक बयान था जो फेडरल रिजर्व के ट्रेजरर है उनका रिसेंटली। आप सोचेंगे कि ये कोई पंजी स्कीम है जो ये चल रहा है, या फिर ये कोई लॉटरी है जो चल रहा है, जैसे कसिनो में जाते लॉटरी होता है कहीं, वही तो नहीं चल रहा है। आपको ऐसा ही लगेगा सुन करके, बट ये है ऐसा ही, पूंजीवाद के नाम पे यूएस में यही चल रहा है। 101 तरीका, हाँ 101 तरीके, इस पे तो भाई किताब लिखी जा सकती है। इसमें मतलब क्या बोलूं, आप इसमें थॉमस पिकेटी का किताब पढ़ सकते हैं, थॉमस पिकेटी। ठीक है, उनका एक अच्छा किताब है इस चीज को लेकर के, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये है, सो नॉट गुड सर ने नॉर्मल एंड गेटिंग रेडिकल, एंड गेटिंग रेडिकलाइज नहीं, रेडिकलाइज नहीं होगा, साइकोलॉजिकल अगर आप देंगे और साथ में आप उनको ट्रेनिंग दोगे स्किल्स में, और आप बोलोगे स्टार्ट ए न्यू लाइफ एंड विथ बेटर होप देन द प्रीवियस, आप उसे एक होप दोगे, बेटर होप दैट कैन हेल्प सिग्निफिकेंटली, इट्स यूजफुल टू हेल्प बेसिकली इन दैट वे। ठीक है, एंड आप ये भी बोल सकते हो मे बी give them to read books of secular literatures and all those, that might help, you know. Israelis don't get radicalized, are you sure? आप एक बार चेक करो भाई, आप पढ़ोगे तो आप पागल हो जाओगे लिटरली। देर आर multiple people in IDF and other this Israeli organization who are radicalized, literally radicalized. They don't express it publicly, but it's there literally. I mean, it's kind of like an open secret here. Okay, open secret. मोदी का फोटो पर कोई ना भक्त का नाम लेने से ज्यादा पुण्य मिलता है। I don't call them even as liberando. I call them as sometimes soft Hindutvavadis. Maybe Dhruv Rathi is an example of that. Basically, he was defending Ramayana. वो रामायण में उनके बयान देख लीजिए, ही काइंड ऑफ लाइक सॉफ्ट हिंदुत्व। आई मीन हिंदुत्व भी मैं मान लूंगा, लेकिन क्या है कि मैं मोदी का भी विरोध करते हुए दिखा लूंगा, सदगुरु का भी मैं पैर छू लूंगा, मैं बीजेपी के अगेंस्ट भी बोलूंगा। इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, आई मीन इट्स मेस्ड अप हियर, दैट्स व्हाई आई सेड देयर इज नो लाइक distinction as left and right in India. Basically, it's all like opportunistic capitalism which is happening here. Opportunistic capitalism, basically. That's exactly what's happening here, to be honest. The great American dream was, the American dream is somewhat waning, it's kind of failing. I mean, I don't know what is the future ahead, but it's not, I don't know when it will take time for people to realize it, but yeah, I mean, it's in kind of declining mode, basically.
Okay, if nobody else is joining this live, अगर कोई और ये लाइव ज्वाइन नहीं कर रहा है और कोई ये बात नहीं कर रहा है तो मैं ठीक है, आज के टाइम पे मैं आज का ये लाइव यहीं पे एंड करता हूं। और आपको पता चल गया होगा कि ये मीडिया अगर आपको कोई लेफ्ट और राइट बोले ना, मत फंसिए। ये देखिए पूंजीवादी है कि नहीं है। अगर दोनों पूंजीवाद की बात कर रहे हैं, पूंजीवादी है अलग तरीके से, तो समझ जाइएगा क्या है सच्चाई बेसिकली। ओके, दैट्स द थिंग टू लुक एट इट एट द फर्स्ट प्लेस। ओके, सो सीध राशि का ओके, तो बेसिकली गंगाधर ही शक्तिमान है। मतलब यहाँ पे राइट विंग भी कभी लेफ्ट जैसी बातें कर लेगा, लेफ्ट भी जो सो कॉल्ड है बात कर लेगा, लेकिन मीडिया फिर भी बताता है ये लेफ्ट है ये राइट है, फिर भी मीडिया आपको यही बताएगा। तो मीडिया नहीं, माफिया बेसिकली आपको यही बताता है। ओके, विद दिस आई एंड माय लाइव। चलिए मैं आज का लाइव यहीं पे एंड करता हूँ। संडे को मिलते हैं जियो पॉलिटिक्स को लेके। मैंने अपना एक आर्टिकल भी लिखा है, उस आर्टिकल और उस वेबसाइट के लिंक को भी मैं शेयर करूंगा। जियो पॉलिटिक्स क्यों मेरे को लगता है गलत है, और मुझे लगता है कहाँ इंडिया को सही करना चाहिए जियो पॉलिटिक्स अपना। कुछ बातें शायद कंट्रोवर्शियल लग सकती है, बट it's the long term good which I think from here 20-30 years from now. I'm thinking like 20-30-40 years from now. मैं अभी का नहीं देख रहा, आगे का मैं सोच के बता रहा हूँ। ओके, with this I end my live. Thanks for joining. Bye, good night, happy weekend, happy Friday. Or if there anybody else wants to join this link, I have pinned the StreamYard link. Click on the StreamYard link and join. अगर आप में से किसी को लाइव ज्वाइन करना है तो वो StreamYard लिंक को क्लिक करें और ज्वाइन करें और बातें करें, यहाँ अपनी बातें शेयर करें। ठीक है, ये लाइव अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है तो हेल्प करें सब्सक्राइब करवाने में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये लाइव को देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाए ताकि पता चले मेरा चैनल क्या कर रहा है। ओके, so let's see going ahead. Here's another thing. So what else is there? Anybody wants to join the live? Click on the StreamYard link. I'm just waiting. If no joining, maybe I will end it here. Okay. तो लाइव को शेयर कीजिए अगर आप देख रहे हैं, और अपने दोस्तों को, परिवार को, गांव वालों को, आसपास के लोगों को, और हम उनसे बातें करेंगे आराम से बैठ के। ओके, ठीक है, अगर नहीं तो मैं आई एम जस्ट एंडिंग माय लाइव हियर। थैंक्स, बाय, गुड नाइट, हैव अ हैप्पी फ्राइडे, हैप्पी वीकेंड, लव यू ऑल, बाय।